Hello friends, how are you? I am Rajkishore Kumar. Welcome to our channel RDPS Competition and Education. In this channel we have to learn the science of class 1, chapter number 7 and lecture number 3. lecture number 2 में हम पढ़े थे फूड्स फ्रॉम एनिमल पढ़े थे, कल अच्छे से डिटेल में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे हेल्दी फूड्स क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का, व्हाट इज हेल्दी फूड? It is the food that helps to maintain or improve overall health. Overall health such as growth, development, and become strong are called healthy food. देखिए हेल्दी फूड क्या आता है? इट इज द फूड दैट हैज टू मेंटेन और improve overall health such as growth development and become a strong circle. healthy food healthy food वैसे फूड है जिसको खाने से हम मेरा मेरा बॉडी का हर चीज मेंटेन रहेगा, ग्रोथ मेंटेन रहता है और डेवलपमेंट यानी बड़ा छोटा जो भी बढ़ना होता है उसको मेंटेन करके रखता है और हमारा बॉडी हमेशा स्वस्थ रहता है। हेल्दी फूड खाने से हम उसको क्या कहें, उस फूड को, जिस फूड को खा करके हम लोग स्वस्थ रहते हैं उसको हम कहते हैं हेल्दी फूड। कुछ एग्जांपल्स हैं हेल्दी फूड्स। एग्जांपल्स, food like rice, bread, sugar, potato, butter, fruits, seeds, eggs, meat, nuts, veggies, seafood, grains, legumes, dairy, fat,
oils, tubers, vinegar, chocolate, chocolate gives us energy, energy to do our day to day work। देखिए एग्जांपल से कुछ फूड का एग्जांपल से फूड लाइक राइस, ब्रेड, शुगर, पोटैटोज, बटर, fruits, seeds, eggs, meat, nuts, veggies, seafoods, grains, legumes, डेयरी मीन्स होता है जो दूध से दूध वाला जो प्रोडक्ट होता है, फैट ऑयल्स, फैट एंड ऑयल्स, ट्यूबर्स, विनीगर्स, चॉकलेट गिव अस एनर्जी टू डे वर्क। ये सब फूड खाने से हम लोग को एनर्जी मिलता है, हर दिन का हर दिन का कोई भी एनर्जी मिलता है तो उसको कोई भी काम हर दिन का काम करने के लिए एनर्जी मिलता है। ये सब फूड से हमको एनर्जी प्रोवाइड होता है और ये सब फूड को हम हेल्दी फूड भी कहते हैं। उसके बाद क्या है हेल्दी फूड्स, और भी आगे क्या है चाहे देखिए पढ़ते हैं। foods like milk, eggs, fish, meat and pulses help us to become strong। देखिए फूड्स लाइक मिल्क, एग्स, फिश, मीट एंड पल्सेस हेल्प अस टू बिकम स्ट्रॉन्ग। ये सब फूड जो है हमको स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। आगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स protect us from disease। देखिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। फ्रूट और वेजिटेबल जो है हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है डिजीज से। उसके बाद हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देंगे, आप लोग सॉल्व करेंगे अभी। चलिए तो कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग इस फूड्स में से बताएंगे, ये सब जो फूड जो लिखाए हैं इसमें से बताएंगे कि कौन पौधा से है और कौन एनिमल से है। तो चलिए लिखते हैं राइस, ब्रेड, शुगर, पोटैटोज, बटर, फ्रूट्स, सीड्स, eggs, meat, nuts,
seafood, grains, legumes, dairy, vinegar, chocolate। तो इसमें से हमको बताना है कि कौन सा फूड नीचे लिख देते हैं उसका ऊपर वाला हेडिंग, राइट P for food from plants and A for food from animals। राइस कहाँ से हमको मिलता है? ऑब्वियसली प्लांट से। ब्रेड प्लांट से, शुगर प्लांट से, पोटैटो प्लांट से, बटर एनिमल से, फ्रूट्स प्लांट, सीड्स प्लांट, एग्स एनिमल, मीट एनिमल, नट्स प्लांट, सी फूड एनिमल्स, ग्रेन्स प्लांट, लेग्यूम्स प्लांट, डेयरी एनिमल, विनेगर प्लांट, चॉकलेट एनिमल्स। ये सब जो फूड है, जो फूड हम आइडेंटिफाई कर दिए हैं, कौन सा फूड किससे मिलता है, कौन सा फूड कहाँ से मिलता है। कल का क्लास में हम पढ़ेंगे मील्स इन अ डे। आज हम यहीं तक अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। आप लोग मन से पढ़िएगा और आपको थोड़ा भी इस वीडियो से मदद होता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन का दबाना ना भूलें ताकि ऐसा वीडियो हम हर रोज़ बनाते हैं, आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। आप लोगों को देखने के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।